On behalf of the Global Call to Action Against Poverty, GCAP's Global Council, our co-chairs and our members from close to 100 countries around the world, we would like to express our joy and solidarity with the relaunch of GCAP in Japan as Ugoku Ugokasu. We are really excited that GCAP is now in Japan, is part of the global family that is fighting for trade justice, for debt cancellation, for better and more aid, as well as fighting for climate justice, gender equality, and good governance and democracy around the world. The people of Japan stood up in 2005 in large numbers and supported the global call to act against poverty and inequality. That commitment has been seen in 2006, 2007, and 2008 by Japanese men, women, and young people participating in the Stand Up and Take Action Against Poverty and Inequality. We urge our brothers and sisters in Japan, as part of GCAP, as Ugoku Ugokasu, to be involved in Stand Up in October this year, but also to support the mobilization of GCAP around the G8, around the UN General Assembly in September, and importantly at the Climate Change Summit in Copenhagen in December. So we need your support, we wish you well, and we wish you the very, very best in being a dynamic part of the global call to action against poverty in our quest for justice and fairness for all the people in the world. Kwa niaba ya UNDP na mimi kama mama shujaa kwa mapambano ya mama wa Afrika, nataka kuwashukuru kwa muungano wenu GCAP Japan kwa kusimama na watu maskini ulimwengu mzima. Hakuna nchi ambayo inaweza kushinda vita ya wasikini bila kuhusisha wakina mama. Njaa, vifo vya watoto, vifo vya wamama wajawazito na ukimwi haviwezi kuisha bila kuhusisha wakina mama. Kwa hivyo UNDP inawashukuru GCAP Japan kuweka masuala ya wakina mama kibao mbele kwa mapambano yenu ya umaskini. Asante sana. यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम कैंपेन की तरफ से उगोको उगोकासु ग्लोबल कॉल टू एक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी जापान को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम कैंपेन और जापान का कोएलिशन, इनके बहुत गहरे संबंध रहे हैं और इसके आगे भी हम लोग इकट्ठा काम करेंगे। जापान हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, जहां जो उद्दिष्ट 8 है, वो 8 को सफल करने के लिए 0.7% ओडीए का देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जापान और जापान की सिविल सोसाइटी, जिसका लीडरशिप GCAP जापान अभी ले रही है। सो दोस्तों, मेरी तरफ से फिर से एक बार धन्यवाद, शुभकामनाएं और आगे के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं ये चाहता हूं कि 2015 तक हम लोग इकट्ठा काम करते हुए जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है उनको पाने के लिए इकट्ठा एक जोरदार हमारी अभियान को जोरों शोरों से चलाएंगे एंड वी विल सक्सीड। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।